नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जिंदल, retired from Canara Bank and IBPI registered valuer institute in financial services. So today we shall discuss on International Valuation Standard 101, which belongs to the scope of work. Now we know that as per Companies Act 2013 under section 247, valuation in respect of any property, stocks, shares, debentures, goodwill, or any other equity stake or net value of the company or its obligation under this act must be carried out by a person with such qualifications and experience and registered as valuer in the manner and on the terms and conditions as may be prescribed and appointed by an audit committee. So this is the brief. The company's registered valuer and valuation rule 2017 provides the framework for the registration of valuers and the manner in which they are carried out. So it is also described and prescribed and provided. The rule states that no person shall practice as a registered valuer without obtaining a certificate of registration. So the Insolvency and Bankruptcy Board of India is the registration authority, is the authority which is established under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and is responsible for registering valuers. तो यहाँ पर हम अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। हमारे पास रजिस्टर होने का लाइसेंस होना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर फीस जमा होने के बाद जो भी लाइसेंस यहाँ से मिलता है वो होगा, तभी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। The authority conducts a valuation exam to test the knowledge, practical skills, ethics of individual in respect of valuation. The syllabus for the examination is determined by a committee of experts constituted by the registration authority. Recently, the syllabus is updated and same will be effective from 1/5/2024. You can go to the website, download the new syllabus. So while conducting the valuation of the registered valuer shall make the valuation as per either internationally accepted valuation standards or valuation standards adopted by the registered valuers organization where the registered valuer is enrolled. Valuation standards are also issued by the Institute of Chartered Accountants of India and then can be adapted for Indian purpose. For the globe purpose, mostly internationally accepted valuation standards are required and are in operation. The International Valuation Standard Council is an independent, not-for-profit organization committed to advancing quality in the valuation profession. So it is an independent and as well as non-profit organization which is virtually into the emerging profession of valuation and to build on it. Now, the IVS Standard 101 is on the scope of the work. The scope of work refers to terms of the assignment to be carried out, the assets to be valued, and the purpose
of the valuation and responsibility of the parties involved in the valuations. Means there are three parties. क्या एसेट को वैल्यू करना है, कौन कर रहा है, किस पर्पज से हो रहा है, किस किस के लिए हो रहा है, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल. This standard applies to the valuations by employees for their companies and valuers conducting valuation for their client who are not as an employee. Means चाहे एम्प्लॉय करे या आउटसाइड एम्प्लॉयर करे, दोनों के लिए ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है. इसी के हिसाब से वैल्यूएशन करना जरूरी है. Now what are the requirements? The advice given and the work undertaken must be appropriate. It should be appropriate for the intended purpose. जिस intended purpose के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जो advice है, जो कार्यक्रम है, वो appropriate होना चाहिए. Valuer must ensure that the recipient shall understand the advice provided and the limitations, if any, on its use before the report is finalized and submitted. तो कई बार क्या होता है, कुछ caveats, कुछ limitations, you are not a 100% foolproof person, and also you are 100% foolproof for information is also not available from the system. So we have to make some assumptions, we have to make some caveats, we have to make some limitations, and on behalf of that, to the best of information, the intended valuation, estimate of valuation is provided. So valuer must communicate to the client the scope of work before completing the work, including the एडवांस में ही कुछ चीजें उसको बता देनी चाहिए कि भाई क्या क्या लगेगा, क्या क्या चाहिएगा, क्या क्या काम होना है. Now, identifying the value. First of all, we have to make it clear that valuer will be alone or with a group of persons or associations or has any connection with the client or its associates or company. So we should see that arm's length पे आदमी होना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीजें पहले बतानी है कि आप वैल्यूएशन अकेले करेंगे या ग्रुप ऑफ पर्सन्स में करेंगे, एसोसिएशन में करेंगे और उस इंस्टीट्यूट के साथ या उसके किसी रिलेटिव के साथ या किसी एसोसिएशन कंपनी के साथ वैल्यूअर जुड़ा तो नहीं है. मीन्स valuer is independent or not. Whether he has any stake in the assets being valued or with any other parties to the valuation. So यदि asset में उसका कोई interest है तो उससे valuation बायस होने की उम्मीद होती है. तो ये सब चीजें पहले आपको बतानी चाहिए अपने आप. If he has any connection which will bias the valuation assignment and the same shall be brought to the notice. तो नोटिस क्लाइंट के नोटिस में लाना चाहिए कि भाई मेरा भी इसमें कुछ टेक है, कुछ इंटरेस्ट है, तो बायस होने की उम्मीद. In such cases, the valuation is in compliance with international valuation standard. तो इसमें क्या है, यदि इस टाइप का कोई आपका इंटरेस्ट है वैल्यूएशन में, इंटरेस्ट है एसेट में, तो इट इज बेटर नॉट टू एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट. यू शुड रेफर टू द अदर वे बिकॉज इंडिपेंडेंस इज ब्रीच्ड, ऑब्जेक्टिविटी इज ब्रीच्ड और वो इंटेंडेड पर्पस इज ब्रीच्ड. नाउ आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स. so you should be assured enough कि वैल्यूएशन किसके लिए हो रहा है, किस क्लाइंट के लिए हो रहा है, सो दैट प्रॉपर फॉर्मेट कैन बी अडॉप्टेड फॉर द वैल्यूएशन. होटल इंडस्ट्री के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, सॉफ्टवेयर के लिए है, विंड एनर्जी के लिए है, फॉरेस्ट के लिए है. सो डिफरेंट पॉइंट
should be incorporated into the valuation report. Identification of other intended users so that report content and formats meet their requirement. यदि ये इंटेंडेड यूजर 2-3 हैं या ये कुछ स्पेसिफिक है, तो उसी के बिहाफ पर वो किस पर्पस के लिए चाहते हैं, क्या उनका यूज होना है, उसी हिसाब से उसके ऊपर पॉइंट उसमें फॉर्मेट में क्लियर किए जा सकते। आइडेंटिफाई द एसेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिस चीज की वैल्यू होनी है उसको बकायदा आइडेंटिफाई करना है। वो है स्टैंड अलोन है, कहीं इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर है, मूविंग है, नॉन मूविंग है, पार्ट ऑफ अदर एसेट है या इंडिविजुअल है। तो ये सब चीजें भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ये भी उस स्कोप ऑफ वर्क में आता है। वैल्यूएशन करेंसी, अब किस देश में ये वैल्यू हो रही है, किस देश के लिए यूज हो रही है, वैल्यूएशन इंडियन रुपी में चाहिए या डॉलर में चाहिए, जापानीज येन में चाहिए या धीरम में चाहिए, तो करेंसी प्लेज ए वाइटल रोल एंड देयरफॉर determining the currency in which the asset will be valued is very, very important. Now, purpose of valuation, we know that it is utmost important and is however very essential character of the valuation assignment. The purpose of valuation also affects the selection of basis of value to be used. किस basis पे होगा? That is a part of IBS 102. So we shall discuss the basis of valuation in IBS 102. Valuation date is also very, very important. एक पर्टिकुलर डेट को ही वैल्यू होती है, पर्टिकुलर इधर उधर होगी तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इफ वैल्यू विल चेंज इफ वैल्यूएशन डेट इज, सो हर रोज वैल्यू बदलती है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो यदि 2 डेट्स के लिए वो वैल्यूएशन डेट नहीं चलती और एक ही वैल्यूएशन डेट के लिए वैल्यू की जाती है। Under Insolvency and Bankruptcy Code, the date of commencement of CIRP or liquidation date are considered as valuation date. तो उस डेट पे ही क्या वैल्यू है जिस डेट को कंपनी लिक्विडेट हो रही है या जिस डेट को उसका CIRP कमेंस हुआ है। The valuation is to be determined on that particular date, though actual valuation is carried out at a subsequent date. तो you identify the date and उसके बाद भी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज ये पास्ट इंसिडेंट्स का ही एक किस्म से एक्सरे है और उसका मंथन है। The facts remaining on the date of valuation are to be considered. उस पर्टिकुलर डेट को क्या फैक्ट्स रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे वैल्यूएशन को करना है। Limitations, if any, shall also be specified in this scope. क्या क्या लिमिट्स रहे, किस कहाँ से डाटा लिया जाएगा, क्या क्या हम अजम्पशंस ले लेंगे, जो चीज अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि अगले 5 साल का डाटा लेना है, तो 5 साल का डाटा वो कई बार रियल है, कई बार अनरियल है, ट्रेंड के बेसिस पे लिया जाता है। वो खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा आने वाले 5 साल में, ये तो आने वाले 5 साल ही बताएंगे। तो इस टाइप की कुछ लिमिट और अजम्पशंस मानकर चलते हैं। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन relied on carrying out the assignments of valuation shall also be identified. कि हम कहाँ किस सोर्स से लेंगे, whether it is structured source और unstructured source. मान लीजिए हम लोग लिस्टेड कंपनियों का डाटा स्टॉक एक्सचेंजेस से लेते हैं, डे टू डे वहां पर स्टॉक लिस्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, डेली रेट हम लोगों को पता लग रहे हैं, वो लेंगे या अनलिस्टेड कंपनी को ये से कंपेयर करें। तो कंपेरेबल रेट कहाँ से लिए जा रहे हैं, किस नेचर से, अगर पब्लिश्ड गवर्नमेंट पब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन से कोई डाटा लिया जाता है, दैट इज
यूजफुल एंड ट्रस्टेड, बट यदि अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन से ली जाती हैं तो उनका ट्रस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सिग्निफिकेशन एग्जम्पशंस एंड स्पेशल एग्जम्पशंस शैल बी आइडेंटिफाइड, तो ये भी हमें पहले से ही मान कर के चलना है। नाउ type of report, that how the report will be presented and shall also be clearly mentioned. So sometime it is also happened that कि हमें इस फॉर्मेट में वैल्यूएशन चाहिए, जैसे बैंकों में ज्यादातर होता है, उनके वैल्यूएशन फॉर्मेट अपने आप में स्ट्रक्चर्ड होते हैं और उसी में ही उनको वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होती है। Any restrictions in use, distribution and publication of valuation report must be clearly stated. तो इस टाइप को डालना है कि ये रिपोर्ट इस दिन के लिए है, इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए है, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है और किसी दूसरे के लिए वैलिड नहीं है। Any deviation to the international valuation standard and extent reasons for such variation in IVS shall be stated. यदि आप IVS स्टैंडर्ड से डेफर कर रहे हैं, थोड़ा उनको ब्रीच कर रहे हैं, थोड़ा उनसे दूर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं उसका स्पेसिफिक रीजन रिपोर्ट में होना चाहिए। नाउ सिग्नेचर, wherever it is possible the agreement shall be signed by all the parties concerned on the scope of work determined and agreed, तो सब लोगों के उसके ऊपर साइन होने चाहिए। However, if that agreement is not signed, the valuer is required to communicate to the client on the scope of work, and detailed scope should be prepared and communicated to the client under the acknowledgement of that person or through the registered board or speed post, so that you can say that the same is conveyed on so and so date. So the points above mentioned are illustrative only and not adjust. Still, you can add some points, you can delete some points as per your requirement. Deletion is not recommended, at least because these are taken from the IVS standard 101. So you can add into more points as per your requirement. Sometimes it is not possible to list all the points at the beginning of the assignment itself. तो ये संभव नहीं होता कि हम इतना ज्यादा इमेजिनेशन पहले से ही कर लें। टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, नई इंफॉर्मेशन आती रहती है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असाइनमेंट द डिटेल्ड स्कोप शैल बी कम्युनिकेटेड एज एंड व्हेन देयर अराइजेस a need and incorporate necessity. तो कुछ चेंजेस इन बिटवीन भी की जा सकती हैं। So the valuer shall take all the above points into consideration to be an IVS compliant in designing and drafting the scope of work under IVS 101. So this is from my side. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।